टाकी टाकी आपने सबने ये गाना सुन रखा होगा। देखते हैं कि इसका एक्चुअल जो वर्जन है, मतलब ये म्यूजिक कहाँ का है, किसी को पता और है या क्या नहीं आप पता। मराठी हैं या आप गुजराती हैं और फिर भी आपको पंजाबी या कहीं और का म्यूज़िक पसंद है? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। Stay connecting for today's video in which I'm going to share sample answer, one of the latest cue cards that you would find in the list. The cue card is describe an interesting song. Talk about an interesting song that you like. आज का वीडियो इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर देगा आपको एंड द आइडिया बिहाइंड दिस क्यू कार्ड एंड बिफोर आई मूव हेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to help me to grow more, and you will find almost every cue card sample answer video on this channel. And if anything you think still not available, let me know in the comments section, and in the next video I will definitely share it with you. At the same time, you can also purchase my speaking booster to get the latest and the complete IELTS speaking exam content in written format. The purchase link of the IELTS speaking booster is available in the description of this video. The cues of today's cue card, which is describe an interesting song, can be what song it is, when and where did you hear it, and why it is interesting, or what is interesting about the song, why you like it so much. Well, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो आपने सुने हैं और आपको अच्छे लगते हैं। आप प्राइमरली कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, मुझे बताइएगा और देखते हैं कि कहाँ का म्यूज़िक जीतता है कमेंट सेक्शन में। अगर आप पंजाबी हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको पंजाबी म्यूज़िक पसंद है, हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, और क्या आप मराठी हैं या आप गुजराती हैं और फिर भी आपको पंजाबी या कहीं और का म्यूज़िक पसंद है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और देखते हैं कि कौन सा म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पर इंडिया में रहने वाले भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ का म्यूज़िक पसंद करते हैं। टाकी टाकी आपने सबने ये गाना सुन रखा होगा। देखते हैं कि इसका एक्चुअल जो वर्जन है, मतलब ये म्यूज़िक कहाँ का है, किसी को पता है या नहीं पता। वेल, लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट एंड विच इज़ द आइडिया बिहाइंड द क्यू कार्ड। मैं बात करने जा रहा हूँ नेशनल एंथम की। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए सॉन्ग है, किसी भी कंट्री के लिए नेशनल एंथम रहता है, और उसी को मैंने चूज़ किया एज एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग। कब सुना? पहली बार सुना जब मैं स्कूल में था, शायद फर्स्ट ग्रेड में था या सेकेंड ग्रेड में, कुछ भी आप बोलिए। क्या था, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसे सॉन्ग को किसने लिखा, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री की इतनी सी तो नॉलेज डेफिनेटली हमें है कि किसने लिखा है ये और ये क्या बताता है, और वही चीज़ इसको बनाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है। इसकी इमोशनल वैल्यू क्या है, पेट्रियाटिक मतलब देशभक्ति से भरा हुआ, कैसे ये सारे इंडियंस को कनेक्ट करता है, जहाँ पर इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले, कल्चर्स, ये सभी चीज़ों के रहने वाले लोग रहते हों, लेकिन एक गाना, एक नेशनल एंथम जो सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है एज एन इंडियन। अगली बात करूँगा मैं कि इसकी खूबी जो है वो है कि इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो इंडिया की ज्योग्राफी का या कल्चर का या इसके ट्रेडिशंस का वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जब आप इसे सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया एक कितना डाइवर्स कंट्री है। चाहे वो हिमाचल की बात है, चाहे वो यमुना की बात है, इसके रिवर्स की बात है, माउंटेन्स की बात है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपके साथ सैम्पल आंसर शेयर करने जा रहा हूँ, एंड आई बिलीव यू आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा आपका कोई और फेवरेट सॉन्ग है या इंटरेस्टिंग सॉन्ग है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड। Well, music is something that everyone loves, and we often find some songs quite interesting, either due to music or lyrics. Here, I would like to talk about a song that represents the history and culture of my country, and I find it to be the most interesting. It is none other but the country's national anthem, and I heard it for the very first time when I was in grade first. Actually, it is more like a ritual in my country that in every school, national anthem is played during the morning assembly. It's a way to make children get familiar with country's history, geography, and promote unity at the same time. National anthem is in the regional language, and
It is written by the famous poet Rabindranath Tagore, and it describes the country India in a very aesthetic way. It boasts the various features of the geography of India, especially the Himalayan rivers, along with the cultural diversity. By reciting it over and over, I have learned it by heart, though its lyrics are a little challenging to memorize. I must say that I particularly like the musical notes of this song, and every time I listen to it, it evokes my patriotic feelings. This one song unites the entire nation and makes people of different religion, caste, creeds feel united. That's the reason why it is always played on national days to bring the entire nation together. Similarly, during sports events also, it is played to boost the morale of the players and to release their national feelings. I find this piece of music highly inspirational and energy giving that whenever I feel low, I play it loud to feel rejuvenated. Overall, it is one song that I find interesting. And that's it. I hope you can comfortably follow the sample answer of this cue card and let me know other cue cards which you think are still pending. And in the next video, I will share more sample answers with you. And now let's quickly check out what is Speaking Booster and how you can purchase it. This is pretty much all. Bye bye for now. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you're an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!